So what these people did, فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. So they were told to say hitta. So instead of doing that, instead of entering in the state of ruku', they entered, with their buttocks in this manner. And instead of saying hitta, they start saying habbatun fi sha'ira. حنطة في شعيرة. They're looking for wheat. So instead of saying this, they said this word that we want wheat. Instead of saying, oh Allah, forgive me, they start saying that give us wheat. بيت भी किया अल्लाह के साथ. ساء الأدب مع Allah. They were very much irrespective to Allah subhanahu wa ta'ala. So what happened? فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. So what we did? So we brought down the azab from the heavens. بما كانوا يفسقون, because of what they were doing. Because of that, the azab came down instantaneous from the heaven. Immediately azab came down. What was the azab? Allah Masiyat Rahmatullah says, that this was a plague. Allah subhanahu wa ta'ala brought down the plague. 70,000 died instantaneously. 70,000 मातो, 70,000 मर गए उसी वक्त. Disrespecting Allah is a very dangerous business. That's why they say that ta'un means any type of azab which comes, which is not a normal, people die of normal diseases. This is cleaning of their sins and stuff like that, and increasing of the darajat. People when they die because of sins, because of the diseases. Cleaning of their sins, increasing their darajat, this is what happens. But when these kind of diseases which come immediately, they say ta'un means, Imam Nawawi Rahmatullah Alayhi writes, ta'un means हर ऐसी वबा को कहते हैं जो आदाती अमराज के खिलाफ हो और इसमें बहुत से लोग मुब्तला हो जाए. Which means this ta'un means in Arabic, in English they call it plague. It means this is not a normal disease. People are dying on a regular basis. Yeah, this is a disease which comes down immediately and it kills a lot of people. That is the reason Umar radiallahu ta'ala anhu in the time of Khilafat actually Rasulullah sallallahu said the ta'un is the azab which Allah subhanahu wa ta'ala used to punish the previous people. And the hadith says, if you go to a place,
if and you hear that there's a ta'un in there, don't go there. And if you're in that city in which the ta'un is there, don't leave. Plague. Any disease which spreads immediately and a lot of people dies. You can say in today's time, corona. So the hadith says that any person, if you are in that place where this came, so if you hear that there is a ta'un in that area, do not travel over there. And if you're in a place in which the ta'un is there, don't leave that place. Which means, if you're in a city in which, like you can say, because this is not a normal disease. People are dying normal diseases. That's something else. Hadith says, this is the disease which comes from the sky. ये आसमानी आज़ाब. ताउन हम उस बला को कहते हैं, उस वबा को कहते हैं जो आदाती अमराज के खिलाफ हो और उसमें बहुत से लोग मुब्तला हो जाए. This is called ta'un, in which a lot of people gets involved and a lot of people die. So if you hear that there's a ta'un in one area, don't go over there. And if it's in your place where you're living in, don't travel, don't leave. The ulama, they say, the reason why they say this, that shaitan will put this whisper, look, he left, that's why he was saved. कि मैं निकल गया तो फिर मैं बच गया. Or he might think, oh, I came over here and because of coming over here, I got this disease. This how you will think. यानी अगर आप जिस जगह पे वहाँ से आप निकल गए, आप समझ देखो अच्छा मैं बच गया, वरना मुझे पड़ जाता. और जिस जगह पे आप चले गए वहाँ ताउन था, तो शैतान वसवसा देगा, देखो मैं आया तो खामखा आया, या मुझे अजाब आ या मुझे बीमारी लग गई. हालांकि इनकार तकदीर कुफ्र है. And that al-qadar, destiny, to negate the destiny is kufr. तकदीर का इनकार कुफ्र है. हदीस में आता है कोई मर्ज मुतअद्दी नहीं होता है. It comes in the hadith, there is no such thing as contagious disease. This is true. And Imam Nawawi rahmatullah alayhi says, Allah subhanahu wa ta'ala has made the ta'un, the plague, it's a rahmat for this ummah. हमारे लिए इस उम्मत के लिए it's a rahmat. That's what the hadith says. That is the reason. So when this people say there's no such thing as contagious disease, but the hadith, so the Sahaba said, Ya Rasulullah, when you are saying it's not contagious, but when we take the camel who has this disease of kharish, rash disease, that camel which has rash, if you put them into the other camels which don't have the rash, they also get the rash. So this is contagious. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, who gave the first camel rash? That's why, some of my doctor's friends, when this corona was at the peak, he was saying, how this corona is functioning is amazing. He was saying his many examples that we are with the patient, and behind the patient are two resident doctors. Behind the two resident doctors, there is the primary physician. It's the second level. Resident doctor, primary physician, and then the director of the ward. So corona is coming and hitting the director.
and not hitting the two layers. How is it? How it's happening? I don't know. You're saying. So the director is getting the corona, the resident doctor is not getting, primary physician is not getting, attending physician is not getting, the fourth layer who's far away, he is getting the disease. You see, this virus was very selective and go to it. He was saying to me, he said, I don't understand. And he said, I go to many, and sometimes it is hitting the second layer, sometimes the third layer, sometimes the fourth layer, and sometimes first layer also. So we cannot comprehend how come this virus is, why it's hitting, why it's not hitting the first layer, it's hitting the people in the back. Hands of Allah. यहाँ ये अमर I'll say read and we'll do in English. ये अमर याद रखना चाहिए अल्लाह ताला ने इस जिस्म के साथ तसव्वुरी खवास का दाखिल मिक़दार फरमाया है. You have to understand, this is a very important topic. He's opening up a very important point of the human physiology, human psychology. What you think about yourself will happen with you. What you think about yourself. For example, अगर एक शख्स तंदुरुस्त को ये खौफ बैठ जाए कि उसको बीमारी हो गई है, दिक हो गई है, तो आखिर उसको दिक हो जाती है. क्या कहते हैं दिक को? दिक की बीमारी कहते हैं. सुना होगा ना दिक की बीमारी. एक दिक की बीमारी आई थिंक दिक हो गया इनको, कहते हैं देखिए. हाँ, टीबी. हाँ, दिक की बीमारी कहते हैं उसको, दिक हो गया. He's saying the doctors, they say a person, normal person, if he sits and saying, oh, I have a TB, and after some time he will have TB. Tasawwur ki wajah se. If a person thinks, I have this disease, he will have the disease. मैं बीमार हूँ, बीमार पड़ जाएगा थोड़ा. आप खाली बैठ के सोचते हैं यार मैं बहुत सख्त बीमार हूँ यार, बहुत बीमार हूँ, बीमार हो जाएगा. इंसान का तसव्वुरी निज़ाम उसकी बॉडी के साथ चलता है, उसको इतना इफेक्ट्स होता है. He's saying that if a human being starts thinking that I'm sick, I have this TB, then after some time he will get the TB, tuberculosis. Oh, I'm sick. ऐसे. और ऐसे ही चांद गिरन के वक्त अगर हामिला औरत को कटा हुआ चांद देखकर ये खौफ बैठ जाए कि तो कमज़ोर हमल पर इसका असर तारी होगा, हत्ता कि इसके अतराफ में से कोई उज़ू मक़तूअ होगा, तो ये कह रहे हैं शेख ये कहना ही चाह रहे हैं. बस और तो समझते हैं कि चांद गिरन के ऊपर मैं चले जाऊंगी तो मेरा बच्चा मुझे अबॉर्शन हो जाएगा. उसके उस तसव्वुर की वजह से ऐसा हो जाता है. Like a woman who is pregnant, if she sees eclipse of the moon, lunar eclipse, and she thinks, oh, by saying this, my baby will come out, and I will have a miscarriage. She will have the miscarriage. Acha. There is a reason who thinks that people, they have, bad omen. You know what is an omen? Omen? पता है ना omen? हाँ, omen. नहीं. You know omen, right? Bad omen. O-M-E-N. It's an English word. उर्दू में कहते हैं बदफाली. बदफाली का it's called English omen. I don't know what, you can check in your language what it says, what it means. बदफाली. ये नहीं इंसान ने कहा अभी मेरे सामने से बिल्ली गुजर गई, अब मेरा एक्सीडेंट होगा.
ominous. ये बिल्ली गुजरी है ना, मेरा दिन पूरा खराब गुजरेगा. Like, I'll give you an example to understand what does it mean. For example, it says, if a black cat crosses your path, I will have a bad day. Tell me. He is going to have a bad day. जो बद जो जो अभी बिल्ली गुजर गई, अब तो मेरा शुगून शुगून अनसरदा बुरा शुगून. समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या कहते हैं शुगून? फाल रॉन्ग बद शुगून. ये कि अब ये क्या कहते हैं, अब यहाँ से बिल्ली गुजर गई, ये कुत्ता गुजर गया, तब बस अब तो मेरे साथ पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा मेरा. Now this dog passed in front of me, or this cat has passed in front of me. I'm going to have a bad day, and he will have a bad day. It's called omen in English. But the example, you can understand what it means from the example. तो वो ये कह रहे हैं, इसी वास्ते जुजामी से दूर रहने का हुक्म है कि इसका खौफ और तसव्वुर बैठ जाता है. और अला हादा कुल अमराज में यही हुक्म है. इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया जुजामी से दूर रहो. हाँ, दूर रहो इस वास्ते कि उसका तस्वुर आप में बैठ जाएगा, तो आप ये सोच सोच के आपके अंदर ये चीज तारी ना हो जाए. इसलिए हदीस से stay away from the leper. You know leper? It's a disease, a person leprosy. Because by seeing him, it will stick in your mind, and that will make you sick. That's what the hadith tells us. तो इसी वास्ते ये कह रहे हैं कि बदशगुनी इस्लाम में नहीं है. In Islam, there is no such thing as bad omen. In Islam, anything like this. Some people, when they get out to travel or anywhere, when they hit something, they're going to back it up. They say, oh, it's going to be a bad luck. Yeah, bad omen means bad luck. It's a bad luck. ها الطيرة لا طيرة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول, حديث में आता है कि ये बदशगुनी कोई चीज़ नहीं. لا عدوى ولا طيرة. عدوى means ما في هذه تعرف contagious. There's no contagious disease. ولا طيرة. And there's no such thing as bad luck. Omen is a sophisticated word. In the regular word, it says bad luck. This is the correct word. Bad luck. Oh, this guy came. That's a bad luck for him. When they get up in the morning, anybody. They don't put on before they eat something. Yes, like in Africa, you have bad luck. Over here, every place, people have bad lucks. Oh, if I do this, it's going to be a bad luck. तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है. नबी अलैहि सल्लम is saying, there is nothing like this. There is no such. अच्छा शुगुन करना ये सही है. To have a good, to think about good luck is good, but not the bad luck. Like for example, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when Suhail radiyallahu ta'ala anhu, actually he was not Muslim at that time. He came from the kuffar side. Later on he became Muslim. So when he came, so they said that, Ya Rasulullah, Suhail came. Suhail means ease and comfort. Sahar, it comes from the word sahar, ease. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, it is going to be easy now. Suhail came. He's using his words for good luck. इसको कहा कि अब तो अल्लाह आसान कर देगा. अच्छा गुमान, अच्छा लग तो सही है. बैड लक यार इसकी शक्ल, कहते शक्ल ही मनूस है. सुना होगा ना, his face is bad luck.
Sometimes people say, Manu Shagar, yaar. I've heard this, I mean, unfortunately. Hmm. I remember I was with somebody. We came out of his apartment. This person's neighbor was there. He said, "Yeah, I saw his face. It's इतनी मनुष्य शक्ल है, जब भी तो दिन खराब गुजरता है." He said that this guy's face is so bad, like whenever I see him, I have a bad day. This is called bad luck. So Hadith is saying there is nothing like this. ऐसा कुछ नहीं है. But there is no such thing as bad luck. ऐसा नहीं. अच्छा. क्योंकि what you start, if you think, because why it's going to have, why, because when a person, he, like the sheikh is writing, if you start thinking about, oh, I'm sick, you'll become sick. uh, that's why I used to see my grandfather, and I saw him lying. I have never seen and I used to get sick when I was in the college. Sometimes I would be like, he said, you are my son, and you're like, I'm sick. And then, no, तुम बीमार है ही नहीं, उठो खड़े रहो. It would make me stand. I'm sick. Look at the temperature. Forget the temperature. It's all wrong. And I never seen him, you know, sick. He died in an accident. May Allah fill his grave with nur. And if he would not have died in the accident, he would have gone a long way. His father, 101 साल में, 101. My grandfather's father, he lived for 101 years. And no disease, nothing. Pathan, Khan Sahib. They're all Pathans. My mother said they're all Pathan. नहीं है. Same. नहीं. नहीं. है. Paternal grandfather, maternal grandfather. This is my maternal grandfather. Paternal grandfather is Dada. Maternal grandfather is Nana. Yeah. इस तरह. So he never used to get, I've never seen him later. He was so physically fit, mashallah. He died because of the accident. That was the cause of his, Zahiri. Otherwise, he didn't have no disease or nothing, mashallah. Strong, very strong. क्या आदमी सोचे मुझे कुछ नहीं है, तो नहीं है. ऐसे थे बिल्कुल. I was very hardcore in पढ़ा this. So the Sheikh is writing कि अल्लाह ताला ने यहूदियों को याद दिलाया कि अल्लाह ताला की नेमतों पर बेवकूफ़ी से नाशुक्री करना इनका शेवा कदीम है. कि उनको धूप से साया, रात में रोशनी, तन का कपड़ा, खाने में मन्ना सलवा दिया, आखिर इन्होंने नाशुक्री की. चुनाचे जिस तरह इनको पानी दिया वो मजा बयान करके साथ उनकी नाशुक्री भी बयान फरमाई बिकौली ताला. Now the Shaykh is saying, Allah subhanahu wa ta'ala is saying, this is a very, क्या कहते हैं, बेवकूफ़, stupidity. A person is ungrateful to the ni'mat of Allah. This is called stupidity. That you are ungrateful. अच्छा वो आपको गलती तो आ रही है क्या है. अच्छा और घर में तो बन गए हो लेकिन it is, the Sheikh is saying, it's a stupidity for a person to be ungrateful to Allah. हिमाकत है कि आप अल्लाह से क्या कहते हैं नाशुक्री कर रहे हैं अल्लाह ताला की नेमतों की. It's like, for example, somebody is giving a paycheck. ठीक है ना, you're getting a paycheck for doing nothing. You're getting a paycheck. So saying, oh, only $1,000, I could have gotten more. But you be grateful you're getting this 1,000. Look at the people who are, who are so deprived. So why you are complaining about your paycheck? Why are you complaining about your job? Why are you complaining about your
finances. Why you're complaining about your situation? No, I don't have this. I'm not. Why are you looking at the negative aspects? Like for example, this is right. There's two ways to look at these things. One is this, half empty and half full. If you somebody asks how much is it, half is full. If you ask some person how much is it, oh, it's half empty. So why are you looking? Look at this. Be grateful that you have this. Why are you looking over here? So when a person looks over here, Allah becomes angry. And if you look at this, Allah makes you happy, Allah will fill this up. La in shakartum la azidannakum. I will fill the whole thing up. Wala in kafartum. If you are ungrateful about this thing, Allah says, Inna adhabi la shadid. I am going to even take this from you. I will tell you one story in the time of Musa alayhi salam. It's a very interesting story. Musa alayhi salam, he used to go to talk to Allah. While going, he met a poor man. So the poor man said, where are you going, O Musa? I'm going to talk to Allah. So you know what? Can you do me a favor? I want to send through your message to Allah. He said that, what the message? He said, ask Allah, tell Allah, I am so poor. Please increase my rizq. I'm so poor. Allah said to Musa said, okay, I will say this to Allah. Okay, no problem. Then he kept on going. He saw another person. So the other person said that, oh Musa, yes, where are you going? He said, I'm going to talk to Allah. He said, can you do me a favor? He said, what is it? I want you ask Allah to stop giving me so much wealth. Wealth. Too much money. Because don't forget, in the previous times, the money was not on the phones. Bitcoin or this was not the money. Money means actual gold coin in your hand. 100 gold coin means 100 gold coin in your hand, this much. If it is 1,000 gold coins, then you cannot lift it. How will you lift it? So having a lot of wealth, which means, for example, if your whole, the whole room is filled with gold. So your mind is over there. You need to make sure that there is security over there. Nobody steals from you. And it's a headache to just manage the actual physical money which is present with you. So he said, ask Allah to give me but less, not this much. Allah said, okay. Musa said, okay, I will do this. So he went to Allah subhanahu wa ta'ala. One said he's too poor, and the second one said that he's too rich. Allah answered them. And Musa alayhi salam came back. So while coming back, he found the rich person, because rich person was coming first. So he said, oh Musa, did you talk to Allah? He said, yes. He said, what Allah said? Allah said, stop thanking me and I will make you poor. Stop thanking me, and soon this wealth will go away from you. So you have no issues. So he said, how can I not thank Allah? Forget the one He has given me this body. And he threw his axe which he had on the ground, and the axe got stuck in the ground like this. So when he threw, the axe got stuck in the ground like this. So he said that this. So he picked it up. He found a big pot full of gold. Said, yeah, look at this. Then Musa continued, and then he reached this Mr. Poor. So Mr. Poor, Allah subhanahu, he said, yes, Musa, did you talk to Allah? I said, yes. What did he say? He said, start being grateful to me.
Start Grateful to me. Said, grateful for what? What do I have? Nothing. क्या जवाब आया है? So he sat. When he sat, the lungi which he was wearing, it tore into half. तो जब बैठा तो जो लुंगी थी वो भी जो लुंगी थी वो भी उसकी आधी फट गई. चल भाई नंगे ही बैठ. ऐसे तो सी not my story तो सी. हाँ तो जो एक लुंगी थी ना वो जब वो भी बैठा तो वो भी चिर गई बीच से. चल भाई. अब अल्लाह माफ़ फरमाए हमारे पूरे कौम में देखो हर एक नाशुक्र है. If you look, everybody is complaining. Everybody is complaining about the, what do you call, क्या कहते हैं महंगाई. Everything became expensive. अभी शुक्र करो आपको खानों को मिल रहा है. जाके जाके सीरिया वगैरह में देखो खाने को नहीं है उनके पास. अब आप इसमें एक्सक्लूसिव कर रहे हैं. How many countries are there? You have no food to eat. People are complaining, oh, things are becoming expensive. Complaining. ऐसे ही है. तो people saying things are expensive. In our country also, the gas is expensive, petrol is expensive. a lot of countries in Africa, they have gold, diamonds, it's cheaper. No, it's Not being grateful to Allah. Always complaining. हमेशा शिकायत. हमेशा. तो शिकायतें आज हमने क्या पढ़ा कुरान के अंदर जो आयत पढ़े थे कौन सी थी इन्नमा अशकू बस्ती व हुज़्नी इलल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम की रीडिंग दिस आयत. तो अय्यूब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम when his children, because he knew the children are playing games, first of all they took Yusuf अलैहिस्सलाम and he was thrown into the well. Then the second, he Binyamin, Yusuf Islam, he stopped him with a trick. हीले से रोक लिया ना. क्या क्या what he did was how he stopped when he فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك. So I'm your brother. And he said, oh, Binyamin, I want you to stay over here with me. How can I stay? The brothers have taken a lot of oath from the father. Impossible they would let me stay here. He said, don't tell that I'm Yusuf. But I want you to stay here. He said, it's impossible. They will never ever allow me to stay here because they have taken so much, allegiance from the father to make sure that I come back. So Yusuf alayhi said, no problem. I'll do the 30 euro. What did he do? جعل السقاية في رحل أخيه. So there was a mug of gold which the king used to drink from. He put that into the because each brother for his family get one sack. So in the sack of his brother Binyamin, he put that gold mug. And he told his people to put that gold mug in the sack of Binyamin. جعل السقاية في الرحل ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. आवाज लगाई तुम तो चोर हो. ये सवाल ये पैदा था कि यूसुफ ने झूठ बुलवा रहे, चोरी तो नहीं की और कह रहे चोर हो. नबी झूठ कैसे बोलेंगे? He's saying you are a liar. All of you are liars. So what do you think? Yusuf al-Islam is saying he knows that they are not liar. He knows that. But why did he tell the people to tell them that they are liars? Sorry, that not liars, they are thief. इन्नकुम लसारिकून कि तुम लोग सारे के सारे चोर हो. तो क्यों कहा? झूठ कैसे कहा?
मैंने गलत कैसे कहा, सॉरी, कि जबकि वो तो चोर नहीं है, कह रहे चोर हैं आप. He's saying that you all are thieves. In fact, they are not thieves. Why did Yusuf alayhi salam saying them that they are thieves? In fact, they are thieves actually, because they stole Yusuf alayhi salam from the father. That's why I said that you are a thief. क्योंकि चोर थे ना, यूसुफ अलैहि सलाम को चुराया अपने अब्बा से, तो इसे कहा तुम चोर हो. इसलिए उनके ऊपर चोरी का इल्जाम डाला. قالوا واقبلوا, लोग क्या समझे कुछ और. قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون. So what did you lose? قالوا نفقد صواع الملك, the wine mug of the king. Then the brother said, قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا, खुदा की कसम, कसम बड़े खा रहे थे. لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض. We didn't come here to do fasad. وما كنا, we are not thieves. قالوا فما thieves. What about if it turns out that you are liars? What is the solution? What will happen? قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. He said that, okay, if you find the wine, what do you call the goblet, this mug of the king, the gold mug of the king, in any one of us, then that person is going to be your slave. كذلك نجزي الظالمين. ठीक है. If this is, because why they said this, because this was in their in the Shariat. आगे आएगा इसके, अभी इसके आगे आएगा. क्या हुआ? said Allah subhanahu wa ta'ala said, they said that قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. That whoever you will find this wine piece, he is the reward for you. Because in the Shariat of Yaqub alayhi salam, if the thief would steal something, then he would have to serve that person who he stole from for 1 year. He will become a slave for 1 year. 1 साल की गुलामी करनी पड़ती थी जिससे उसने चोरी की. अब क्या किया, ये तो बहुत ज़बरदस्त तरीका था. तो क्या किया उन्होंने, उसी में डाल दिया उनके भाई के उसमें. फिर क्या कहते हैं, قالوا جزاهم فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. So now the brother is here, his actual brother Binyamin, and the 10 brothers. So he started checking from all the 10, and all the 9 he checked. Yes, you are true. It looks like it's not in your. They said, check him also. I said, okay, if you insist. ثم استخرجها من وعاء أخيه. Then he found out, it came out from the things, from the sack of Binyamin. अब यहाँ कुरान कज़ालिक किदना यूसुफ, हमने ये सिखाया यूसुफ को कि इस तरह करके रोको अपने भाई को. हाँ, यानी ये तरीका सिखाया कि आप अपने भाई को अपने पास कैसे रोक सकते हैं. How to stop your brother from going back. This is the trick we taught you so that your brother can stay back. Because this was halal. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. भाई हर चीज़ तो खुदा के हुक्म से हो रही है. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. हर आलिम के ऊपर से बड़ा आलिम होता है. Now when they saw this, they got stuck. तो बोल चुके थे. अब क्या किया? قال إن يسرق, अब्दुल के आगे से क्या कह रहे हैं? فقد سرق أخ له من قبل. ठीक है, ये भी चोर, उसका भाई भी चोरी था. They are saying, yes, he is a thief. His brother also was a thief. Yusuf alayhi salam ने कब चोरी की? When did his brother did the stealing? They are referring about an incident which happened in the early part of the life of Yusuf alayhi salam. Yusuf alayhi salam, his mother, in the time of, we have to go back a little bit more.
याकूब अलैहिस्सलाम was not getting married. ये पूरी कहानी कैसे किसी के बुजुर्ग के ख्वाब में आए कि अपनी दोनों बेटियों से शादी कर दो. So he came in the dream of one pious man, marry your two daughters to this person, Yaqub. So in those days, marrying two sisters were allowed in the Shariat of Musa alayhi salam. So he said, he called Yaqub alayhi salam, he liked him, he said, okay, I will marry you my two daughters. दोनों बेटियों की शादी उनसे कर दी, याकूब अलैहि सलाम से. So both the daughters, both the sisters got married to Yaqub alayhi salam. The first year, one of the sisters was very pious. Another one also, but she was very pious girl. So first year, the other one got son. She did not get. Second year, the other one got the son. She did not get. Third year, the other one got the son. She did not get. And it continued up to 10 years. हर साल इसको बच्चा पैदा हो रहा है, एक दूसरी को नहीं हो रहा, दीनदार थी उसको नहीं हो रहा. 10 साल गुजर गया और हर साल इनके यहाँ बच्चा हो रहा है. तो अल्लाह के सामने रोई कि अल्लाह जी मेरा ऐसा बच्चा ही नहीं, मेरी बहन को तो हर साल मिल रहा है, मुझे नहीं. अल्लाह ने कहा जो तुम्हारा बच्चा होगा वो नबी होगा. यूसुफ अलैहिस्सलाम पैदा होगा और उसका हुस्न खुदा ऐसा देगा कि क़यामत तक उसका जिक्र चलेगा उसका हुस्न का. I'm going to give you a son who will be so beautiful, so handsome that they'll speak about him till the day of judgment. Because his name is in the Quran, that's why the Quran is till the day of judgment. Yusuf alayhi salam, Joseph. In English they call Joseph, Yusuf alayhi salam. So then Yusuf alayhi salam was born. And then the next year after that, Binyamin was born. Then this mother passed away. Mother of Yusuf alayhi salam was passed away. So Yusuf alayhi salam had no mother. Khala to thi, maa nahi thi. So the sister of Yaqub alayhi salam, she loved Yusuf alayhi salam extremely. So she said to Yaqub alayhi salam, Yusuf, can you leave the Yusuf with me? So Yaqub said, Sawali paida nahi hota, impossible. Yaqub loved him also very much. Because anybody who would see Yusuf alayhi salam, he was going to be a future Nabi, and he was the most handsome at that time. So nobody wanted to. So the father said, impossible. उन्होंने अपने पैराहन यूसुफ अलैहिस्सलाम के नेफे में छुपा दिया. अपना पैराहन, पैराहन जानते किसको कहते हैं? पैराहन, पैराहन के जो लफ्ज है क्या कहते हैं? पाउच में पैराहन नहीं सुना आप लोगों ने? पैराहन किसको कहते हैं? पैराहन, अपना पैराहन उनको दे दिया. पैराहन कहते हैं कपड़ों को. पैराहन सुने ना उर्दू में? तो अब क्या हुआ? Attire. She had it inside the Yusuf alayhi salam's nefe में गई, inside his thing. And then Yusuf alayhi salam left with his father. They came to visit once, and she hid her attire with Yusuf alayhi salam. So, and she left, and then the family left. After some time, she started, oh, I don't see my attire. I don't see it. Where is it? He said, not. Huh? She lived with only egg. بيضة بيضة وضع في
عند يوسف عليه السلام. ايوه هذا كذلك موجود في التفسير. يعني egg अंडा दे दी, अंडा उनके अंदर छुपा देता है, एक बार अंडा बास पैरान कहते हैं इस तरह. صحيح موجود في التفاسير هذا الكلام. ولكن يعني المراد هو هي وضعت شيء عند يوسف عليه السلام, هذا هو المراد. So she put this in the belt of Yusuf عليه السلام, in the vest. So they left. Then she started saying, "Oh, where is my attire?" They said they stopped. So I don't see mine. So it's not with us. So let me check. When they start checking, they found in the Yusuf alayhi salam. Achha. So then she said that because the father is a Nabi. But Shariat mein kya hukum hai? What is the in the Shariat that Yusuf alayhi salam has to be slave of his aunt for 1 year. पुप्पी की अब क्या कहते हैं गुलामी में जाएंगे 1 साल के लिए. इस चक्कर से उनको रोका, ये चक्कर चला के इतनी मोहब्बत थी रोक लिया ऐसे करके. यूसुफ हसन कहते हैं ना, मेरी खूबसूरती ने हमेशा मुझे परेशानी में डाला. हर जगह बचपने से मसाइल थे की खूबसूरती की वजह से मैं हर जगह परेशान. भाइयों में क्या कहते हैं हसद हुआ, अब्बा से दूर हुआ, क्या कहते हैं उसने गया, मैं कुएं में गया, फिर वहाँ बिका, फिर मेरी खूबसूरती की वजह से वो जुलेखा का मसला पेश आया, फिर उसकी वजह से मैं जेल में गया. सारी खूबसूरती के मसले कहते हैं मेरी खूबसूरती की हर जगह पे मसला है. आप देखिए यूसुफ की सिर्फ उस खूबसूरती के मसले चल रहे हैं ना, सबसे बड़े मसले शुरू बचपने से. So I was saying in Urdu, he said that because of my beauty I was always in problem. My aunt, she got me like this by this trick to be according to the Shariat of Hazrat Yaqub alayhi salam. Now Yusuf alayhi salam had to stay 1 year in the khidmat of her aunt because her aunt loved him very much, and that's how she got him to stay with him. इस चक्कर से उन्होंने उनको अपने पास रखा. Yusuf alayhi salam said, because of my beauty I got separated from my father. Because of my beauty my brothers were jealous of me. Because of my beauty I was thrown into the well. And because of my beauty they sold me as a slave. And because of the beauty I got stuck, because of Zulekha. She wanted to, she was attacking me. Because of my beauty I had to go to jail. सिर्फ खूबसूरत ऐसे मसले चले पूरे. हम दुआ करते हैं हमें खूबसूरत बना. इसलिए बहुत मरतबा औरतों के मसाइल की खूबसूरती से आते हैं. lot of time the women also have problems because of their beauty. खूबसूरती की वजह से औरतें बहुत मसले में आ जाती हैं, बिगड़ जाती, कई मसले पैदा होते हैं. खैर मौजूद है. तो क्या हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम, so the brother got stuck like this. So this is what they're saying. नहीं तो क्या कहा, यस्रिक फ़क़द सरक़ अख़ुल लहू मिन क़ब्ल. हाँ भाई इसका भाई भी तो चोर था, ये उसकी तरफ इशारा है. उन्होंने कहा हाँ ये चोर है, इसका भाई भी चोर था. खुद यूसुफ साहब सुन रहे. So he's saying that his brother also was a thief. They are referring to this example. वो जो बचपन में आने की उनकी गलती क्या थी. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. यूसुफ ने इस बात को छुपाया और बात को जाहिर नहीं किया. He didn't disclose the secret that you are liars. I am the Yusuf. What do you say? He didn't say that. قال أنتم شر مكانا والله أعلم. तुम बहुत खराब लोग हो, तुम डांटा लोग हो, खराब लोग हो तुम लोग. والله أعلم ما تصفون. Then they said قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. He has a father who's old. فخذ أحدنا مكانه. So we will exchange in front of him because on him. One of us will stay back and we let him go because his father is old and his father loves him because his elder brother also had issue. So he's vanished and now he's the only one left. So the father wants him. That's why one of us will stay
Instead, one of us will serve you instead of him. So Yusuf said, Ma'ad Allah, an na'khudha illa man wajadna mat. हम जुल्म कैसे करें? वो जिसके पास है उसी को पकड़ेंगे. Yusuf said that, how can we do injustice? He is the thief and you want me to stop him? No, I will catch him. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا نجيا قال كبيرهم. अब यहूदा उसके बड़े का नाम था यहूदा. ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله. And the mashwara started taking place. He said, didn't the father said he took a pledge ومن أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله لا تأتونني به إلا يحاط بكم. नहीं أخذ الله क्या है? قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجي قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. तुमने पहले भी गड़बड़ की थी यूसुफ के साथ. Yehuda was the one who was lenient to Yusuf alayhi salam because they wanted to kill Yusuf alayhi salam. They said, don't kill him, throw him into the well. So he's saying again, you also messed up before with Yusuf. فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي. I will also not go back. मैं भी नहीं जाऊँगा. حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. I cannot go and face the father. I will also not go back. You guys go and do whatever you want to do. But I'm also not going. I can't face him. मैं भी नहीं जाऊँगा. यहूदा ने कहा. तो तीन बेटे दूर हो गए. यूसुफ अलैहिस्सलाम, बेनियामीन और यहूदा. 12 में से 3 निकल गए ना. ارجعوا إلى أبيكم. Now they went back. قالوا يا أبانا إن ابنك سرق. अब्बा जी, आपका बेटा चोर निकला. My father, your son is a thief. वमा शहीदना इल्ला बिमा अलिमना. और इतना सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए. हम सोच रहे थे चोर होगा ये और बादशाह का चुरा लिया. वमा कुन्ना गैब हाफिज़ीन. We never knew the future that this guy is going to be a thief. फिर क्या कहा? वस्अल القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. कहा you can ask the city where we were there, the whole story which took place. If you think we are liars, ask them, city. والعير التي أقبلنا, and ask the caravan, they saw the whole thing. وإنا لصادقون. हम बहुत सच्चे हैं. सच कह रहे थे वाकई लोग. मूसा, what did Yaqub alayhi salam say? قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. तुमने तो कोई बात बना ली है. इसलिए झूठा आदमी भी जब सच बोलता है तो उसको कहते हैं झूठा ही. हालांकि सच झूठ आदमी सच बोल रहा है, कहते हैं झूठा ही. प्रीवियस रिकॉर्ड सही नहीं था ना इनका. तो अब सही बोल रहे हैं, लेकिन तुम कभी भी तुम चोरी हो. तुमने ऐसी बात बना ली. قال بل سولت. A liar, previously they were lying. Before they lied. Now they're saying we are truthful, and they were truthful. But because, when the liar says the truth, still that's considered as a lie. This is how the nature is. This is the azab of the liar in the dunya, that people don't trust him. Even though he is saying the truth, people still think he's a liar. तो क्या कहा याकूब अलैहिस्सलाम ने? قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. तुमने तो ऐसी किया, चक्कर चलाया. فصبر جميل. मैं सब्र करूंगा. फिर क्या कहा? عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. हो सकता है तीनों का अल्लाह मुझे वापस बुला दे. إنه هو العليم الحكيم. Allah might bring all of them back, all 3 of them. 3 बच्चे रहे होंगे ना. وتولى عنهم. पलट गए उनकी तरफ से. وقال يا أسفا على يوسف
वबियद्दत ऐनाहु मिनल हुस्न फहुव कज़ीम, हाय यूसुफ, और आंखें उनकी नाबीना हो गई। तो क्या कहा, क़ालू तल्लाह तफ्तअु तज़कुरु यूसुफ, for Allah's sake stop talking about Yusuf, हत्ता तकून हरदन औ तकून मिनल हालिकीन, आप मर जाएंगे, यू विल डाई बिकॉज ऑफ दिस, आपको बीमारी लग जाएगी, मर जाएंगे आप, बस करें यूसुफ का तज़किरा। तो अब क्या कहा, अब व्हाट वाज, दिस इज वेयर एक्चुअली वी वांटेड टू कम, व्हाट डिड यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम सेड, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़नी इलल्लाह, मैं शिकायत करता हूँ अपने गम की, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़नी इलल्लाह, अपने गम की और तकलीफ की मैं खुदा से शिकायत करता हूँ, औलाद की शिकायत नहीं की। सवाल ये पैदा होता है, औलाद की, he did not complain about his children, he complained about his pain। क्यों, औलाद एक नेमत है कि खुदा वो नेमत छीन न ले, क्योंकि लाइन वाला इन कफर तुम में ना आ जाए, नेमत है ना खुदा की वो। तो अगर आप नाशुक्री करोगे, तो खुदा की नेमत की मैं नाशुक्री कैसे करूं? भाई ये औलाद तो खुदा ने दी है ना, तो मैं उसकी नाशुक्री कैसे करूं? खुदा की क्योंकि अंबिया के पास मारिफत होती है, तो वो खुदा की नेमतों की नाशुक्री नहीं करते वो। अंबिया अलैहिस्सलाम, they have the marifat of Allah, so they do not complain about the nemat which Allah has given to them. He did not say, oh Allah, I innama ashku awladi, कि मैं अपनी औलाद की शिकायत करता हूँ कि कैसा खबीस पैदा हुआ मेरे पास। एक बात है, कैसी बेटी है, कैसा बेटा है, कहते हैं ना, पीपल से दिस, कुरान के अंदर है सारा, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, कि बेटी तंग कर रही है, बेटा तंग कर रहा है, औलाद जो तंग कर रही है, तो कहा इस, हालांकि ये तो हमारी औलाद तंग कर रही है, यहाँ तो कत्ल कर रहे हैं लोग, यहाँ तो कत्ल हो रहा है ना, मतलब कैसी औलाद जो अपने भाई को कत्ल करके वापस अब्बा के पास जा रही थी, कितनी छोटी मोटी बदतमीजी कुछ भी नहीं है ना इसके सामने, तो कत्ल कर रहे हैं किसी को, आप किसी को औलाद कत्ल करिए अपने भाई को, कह रहे ये तो आखिरी दर्जे की है ना, मतलब ये तो लिमिट से क्रॉस कर दिया ना उसने, चलो भाई बदतमीजी कर ली, नाफरमानी कर ली, एक छोटी है, यहाँ तो ये कत्ल कर रहे हैं। ये अपने ईश्वर साहब को पता, ये खतर, ये खुद कहा कि जब हम वो दे आर किलिंग द ब्रदर, व्हाट डिड दे से टू याकूब अलैहि सलाम, कुन्ना नरता व नलअब व इन्ना लक़ाल हल, क्या कहा, वजाउ अबाहुम इशाअन यबकून, रात में रोते हुए आए, इन्ना ज़हबना नस्तबिक़, वी वर प्लेइंग, आई मीन वी वर व्हाट यू कॉल, हम भाग रहे थे, व तरकना यूसुफ इंद मताइना, and we left the Yusuf with our clothes, فأكله الذئب, so the wolf came and ate him. Yeah. فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا, और आपको हमारी बात पे एतबार कहाँ से आएगा, ये खुद भी कह रहे हैं, वलौ कुन्ना सादिकीन, हम चाहे कितने ही सच्चे क्यों ना हो। अब लेकिन झूठ तो झूठ ही होता है, झूठ जो है ना, इंसान बेखूबी करता है झूठ में। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा जरा कपड़े तो दिखाओ उनके। याकूब अलैहिस्सलाम said, okay, you're saying that the wolf ate him, yes, show me the clothes. When they show the clothes are all intact, only drenched with blood. तो क्या क्या खुश नसीब भेड़िया मिला है यूसुफ को, कपड़े उतर के फिर खाया ताकि मजा खराब ना हो, कपड़े उतार के खाया ना उसको, कि मैंने कहा ये यूसुफ कपड़े उतारो, वरना मेरा मुंह तुम खाते हो मजा नहीं आएगा, तो कपड़े उतरवाया फिर बाद में खाया,
क्योंकि मतलब टेस्ट खराब है, बिरयानी खाते हुए कंकर आ जाए पसंद नहीं आएगा ना। पर आप कितनी अच्छी चांद के मसाले से बनाए, किसी से बनाए, लेकिन आपकी बिरयानी के कंकर आ जाए तो पसंद नहीं आएगा ना। तो उन्होंने कहा कि भेड़िए ने कहा कि कपड़े उतारिए ताकि मुझे खाने में डिस्टर्बेंस ना हो, सही तरीके से मैं खा सकूं। ऐसे ही हुआ ना, कितना बड़ा धोखा निकल गया, नंबर एक फ्रॉड कर रहे हैं। कुरान कह रहा है कि when they, what happened when they saw that the clothes were intact. So Yaqub said, oh, this wolf was very intelligent. He said, Yusuf, please take off your clothes so I can eat you up. Because the clothes are completely intact. If the wolf have eaten, at least there should have been some tattered clothes, ripped clothes. तो अब्बा को पता कि पूरा ड्रामा कर रहे हैं, सब पता कि खुल के आ गया ना, झूठ दिख के आ गया। लेकिन क्योंकि औलाद नेमत है इसलिए उनकी शिकायत नहीं की अल्लाह से। कुरान कह रहा है कि इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, मैं शिकायत करता हूं अपने गम की और अपने दुख की तुझसे, अल्लाह की नेमतों की शिकायत नहीं की। कि इन तो ये बात सारी चल रही थी, वो शिकायत की, तो यानी आज कुरान के आदमी की आयत आई थी, इसलिए ये भी साथ पढ़ लेते हैं इसका। So he was complaining about the pain, not of the children. A lot of time, the people when they come to me and say, my son is doing like this, my daughter is doing like this, they're complaining about their son and daughter. Their son and daughter has not killed any person or killed their own brother. Even if they had killed, but Ayyub alayhi salam, Yaqub alayhi salam is just complaining to Allah. उस उलमा से एक और नुक्ता निकाला, बद्दुआ भी नहीं दी। हालांकि बद्दुआ दे सकते थे, वो बद्दुआ के काबिल थे कि आप किसी को कत्ल कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, इतना बद्दुआ भी नहीं दी। He did not curse them. You don't curse the name of Allah. इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। जो भी इसे खुदा की नेमतों की ये आप कह रहे हैं कि भाई मुल्कों के अंदर भाई फलानी हुकूमत आ गई, ये कंप्लेन करना छोड़ दें। इन नाशुक्रियों की वजह से अल्लाह ताला अजाब लेके आ रहा है हमारी कौमों पे, कि हर बंदा देखो नाशुक्र का मिजाज है। सास है तो बहू से नाशुक्री, बहू है तो सास से नाशुक्री, बीवी है तो शौहर की नाशुक्री, शौहर है तो बीवी की नाशुक्री, औलाद है तो माँ बाप की नाशुक्री, माँ बाप है तो औलाद की नाशुक्री, भाई है तो भाई की नाशुक्री, बहन है तो बहन की नाशुक्री। हर एक दूसरे से नाशुक्र है। अब ससुराल है तो ससुराल की नाशुक्री, मैका है तो मैके की नाशुक्री। कैसा ससुराल है यार, वो तो कहानी हमेशा सुनते रहते। मैगी की नाशुक्री ससुराल की, क्या कहानी आती है। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह की नेमत है। उन लड़कियां जो अपनी सास की शिकायतें वगैरह करती हैं, कितने मेरे पास भी लोग हैं तड़प रहे हैं, माँ बाप, लड़कियां तड़प रही हमें कहीं शादी हो जाए। आज ही क्या कहते हैं, किसी का फोन आया था, वो बेचारे रोने के करीब थे, एक साहब, कि खुदा के वैसे मेरी बच्ची कहीं शादी करा दे, बच्ची तंग आ गई है, कहाँ शादी होगी। अब शादी, अब जिसकी शादी होगी उनको उनको सास का मसला खत्म नहीं हो रहा, और सास से परेशान है। अब जिस लड़कों की शादी हुई वो क्या कहते हैं बीवी से परेशान है। जब नहीं थी तो दुआएं कराते थे, अब हो गई तो बॉटम लाइन इज दिस,
a person is ungrateful on the ne'mat of Allah. इसलिए ज़िंदगी में कुरान कहता है, that's why Allah says, "Inna azabi lashadid." When a person is ungrateful, "Inna azabi lashadid," तो क्या कहते हैं, my severe punishment will come. I remember one person saying to me, "Oh, my boss is so bad, please give me some dua. He should become paralyzed." Chapta boss है उनका. He has a chapta boss, he says, "My boss is chapta." नहीं चपटा, चपटा मतलब चाइनीज का, चाइना टाउन का है. बस दुआ करो उसको, बस घर में ऐसा पड़ जाए कि उठे नहीं. कितनी मरतबा इतना खत मुझसे काम उन्होंने कि मुझे याद होगी उनकी बात. यार आपकी यार कोई दुआ काम नहीं करी उस पर, मेरी है ही दुआ कौन सी. तो रखिए वहाँ. तो यानी इंसान जो है ना मेरे भाइयों, अब जॉब नहीं तो परेशान है, फिर उसी मन्नत समाजत कर रहे हैं. आपको जॉब मिल गई है तो आप क्या यार हमेशा, हाँ. Yusuf's story is so passionate. It is amazing. I know. Oh yes, amazing lessons to learn from the story of Yusuf alayhi salam. Amazing, amazing lessons, and this which it affects us. It is about us. मुझे सब रोकना करो.
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिकायत की, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने भी शिकायत की। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिकायत क्या है? यूसुफ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम की शिकायत कर दिया है, जिसमें दुआ फजल इन्ना अशकू बस्ती व हुस्नी इला अल्लाह, कि अल्लाह ताला मैं शिकायत करता हूँ अपने गम की। आई कंप्लेन चल रहा है ना? He also complained, oh Allah, I complain ashku ilayka du'afa quwwati, my about my weakness, wa qillata hilati, and about uh, my not being able to deliver the message properly. ताइफ की शिकायत नहीं की, कैसे लोग मेरी सुनते नहीं, कौम की मुल्क की लोगों की शिकायत नहीं की, अपनी कि मैं सही तरीके से बात नहीं कर सक रहा हूँ, इसकी मैं आपसे शिकायत करता हूँ। अपनी शिकायत की, अपनी कम हिम्मती की अल्लाह से सामने। अरे लोग हम क्या है, लोग नहीं सुन रहे, लोग बर्बाद हो गए, कैसे लोग हैं हमारी बात नहीं सुनते, हम मजे से निकालते हैं, ये नहीं किया। लोगों की शिकायत कभी नहीं की। हालांकि आपका क्या ख्याल है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कोई अच्छी तबलीग कर सकता है दुनिया में? He is not complaining about the people of Taif who had stoned him to the extent that he passed out. اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي. You are the Lord of the weak, you are the Rabb of the weak. وأنت ربي, आप मेरे भी रब हैं. या हमारा रब, इला मन तकिलनी, किसके बाद आपने मुझे, इला बैदी यतजहम इल्लम यकुन बिका अलैया गज़बुन फला बली, आप नाराज हैं तो मुझे कोई गम नहीं. If you are not angry, that's all it matters. ولكن عافيتك هي أوسع لي, but at the same time, oh Allah, I want afiyat because I'm weak. That's what he's saying, Rasulullah. And look at his humility in the dua of Rasulullah. So he's not complaining about the people. He's not लोगों की कमजोरी है और लोगों की हमारी कौम ऐसी और लोग ये नहीं करते, उनकी कोई शिकायत नहीं. मैं सही बात पहुंचा नहीं सका इनको, अपनी कमजोरी अल्लाह को कह रहे हैं, तभी तो आसमान फरिश्ते हिल गए. शिकायत की तो अपनी की. If he's complaining about himself. Yaqub is complaining about his own pain, because these are the people who have the ma'rifat of Allah. They, they have the understand, they have the ma'rifat of Allah subhanahu wa ta'ala. खुदा की मारिफत है. तो इसीलिए the lesson which we learn from this is never to complain. People are pelting him with stones and he's not complaining about them. Maulana Shaykh Khasab Rahmatullah alayh, he was in jail in Saudi Arabia. So when he came out, people asked him, what happened to you in the jail? चुप, एक लफ्ज नहीं, एक जुमला जो कहो. He did not open a single word. What happened? खैर हुआ. He said, no, खैर happened. What happened with you? Good happened. Never complain, oh, these people, they arrested me, they put me in jail. एक लफ्ज नहीं, एक लफ्ज भी नहीं. अल्लाह वाले ऐसे होते हैं. This is how the pious people are. Don't complain about their situations, their families, their children, their wives, their parents. कुछ नहीं करते. अभी हम कमजोर हैं इसलिए हम करते हैं. We are weak, so we do it.
मारिफत आ जाएगी तो हमसे आदत छूट जाएगी, क्योंकि अभी हमें मारिफत ताम्मा नहीं आई है, इसलिए हम शिकायत करते हैं। जब मारिफत ताम्मा आ जाएगी तो हमसे आदत छूट जाएगी। Because we don't have the complete marifat of Allah subhanahu wa ta'ala, that's why we complain. Once we get the marifat of Allah, this will leave us. मारिफत ख़त्म हो जाएगा उसका। मारिफत जब अल्लाह की मारिफत आ जाती है तो इंसान फिर शिकायतें ख़त्म हो जाती हैं। अल्लाह ताला हमें इन अम्बिया अलैहिस्सलाम के नक्श कदम पे चलने की तौफीक नसीब फरमाइए। तो जिक्र कर लेते हैं इंशाअल्लाह। जिक्र वो यार 1:30 बज गए। किधर लगा? Read 10 times قل والله. قل والله. قل والله. قل والله. قل والله. Allah. Allah इसका सवाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आदम अलैहिस्सलाम को, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को, अल्लाह इनकी मारिफत हमें भी नसीब फरमाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, खज़र अलैहिस्सलाम, इलियास अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, शीसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह सैयदना हमजा रज़ी अल्लाह तआला, सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला, फातिमा रज़ी अल्लाह तआला, हसन रज़ी अल्लाह, हुसैन रज़ी अल्लाह, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह, मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह, मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह, सुल्तान बाहूर। या अल्लाह तकरीज बख्श ज़िक्र मुल्तानी साहब, अहमद अल्लाह मोहम्मद सामी रहमतुल्लाह, इलियास साहब, यूसुफ साहब, और इदरीस साहब, मोहम्मद असूद साहब, नासिर भाई को, दादा को, दादी को, नाना को, अल्लाह इन सबको इसका सवाल अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि।
इस्तग़फ़ार करना जितने हमने खुदा से जो नाशुक्री की है, जितनी हमने खुदा की नाशुक्री की है उसका इस्तग़फ़ार, ताकि खुदा का अज़ाब हमसे हटे. Ask Allah to, we should ask forgiveness from the ungratefulness which we did with Allah on His blessings, so that the azab which is coming can be uplifted. तो नाशुक्री से अजाब आता है. जितनी हमने नाशुक्री की है, इससे हम तौबा करें. आज इसी से हम तौबा करें, ताकि हमारे ऊपर से, तो हमारे जब खुदा ने अजाब का फैसला किया हुआ है, तो कैसे हमारे पीछे अजाब हटेगा जब हम नाशुक्री कर रहे हैं. वो शदीद अजाब में मुब्तला होंगे. तो इसी वास्ते जितने हमने जानकर या अनजाने में या आदतन हर खुदा की जो नेमत की नाशुक्री की, इससे तौबा करनी है, ताकि हम पर से अजाब दायमी हटे. जो हमारी ये गुनाह की आदत, जिसको गुनाह भी नहीं समझा जाता है, चोरी और जिना को तो गुनाह समझते हैं, नाशुक्री को गुनाह भी नहीं समझते. नाशुक्री कौन गुनाह समझते हैं? कुरान कह रहा है इन्ना अज़ाबी लशदीद, बित्तहक़ीक़ मेरे यहाँ शदीद अज़ाब होगा जो नाशुक्री करेगा. तो जो इंसान नाशुक्री करके खुदा के अज़ाब में मुब्तला है, कैसे निकलेगा? The person has to seek forgiveness from Allah, because he has been complaining and being ungrateful to the ni'mat of Allah subhanahu wa ta'ala. बीमार है तो जिंदगी की शुक्र अदा करें. गरीब है, कम से कम खाने का इसका शुक्र अदा करें. औलाद नाफरमान, शुक्र का औलाद तो है, नाशुक्री क्यों कर रहे हैं? अल्लाह से कहेगा तो उसकी शिकायत खुदा की मखलूक की, खुदा के बंदों से क्यों शिकायत? नबियों का शेवा हमारे लिए नमूना है. अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि. अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि. अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि. अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि. अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह
أستغفر الله 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 وأتوب إليه 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 وأتوب
إليك وأتوب إليك وأتوب إليك وأتوب إليك وأتوب إليك وأتوب إليك وأتوب إليك وأتوب إليك صلى الله على حبيبي سيدنا محمد وآله وسلم صلى الله على حبيبه 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 سيدنا محمد وآله وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم اجزي عنا وعن والدينا أفضل ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه اللهم احشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه اسقنا من يده الشريفة شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف الوالد والوالد والأولاد واشفنا جميعا يا رب العالمين اللهم اشف الوالد يا رب العالمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. عليكم السلام.